Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Jana Rajana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Prajajana Dayana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Sodanandana Vrajajana Rajana Yamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari For your translation. Reading Srimad Bhagavatam, third canto, chapter 29. Explanation of devotional service, text number 25. Oh, no, no, no. No, no, I will speak in Sanskrit. I will sing this. And then word by word. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And then the text is in the board. Arshadau Arshayetavat Ishwaramam Swakarmakrit Yavam Naveda Swaridi Sarvabhute Swavastitam
Arshadau Varchayetavat Ishwaramam Swakarmakrit Yavam Navedaswaridi Sarvabhuteshavashchitam Archadau Darchayetavat Ishwaramam Swakarmakrit Yavam Navedaswaridi Sarvabhuteshavashchitam Archadau Darchayetavat Ishwaramam Swakarmakrit Bhavam Naveda Swariji Sarvabhutesha Vashtitam Jayitava यावत् न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम् अर्चादौ अर्चयेत्तावत् ईश्वरं मां स्वकर्मकृत् यावत् न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम् अर्चादौ अर्चयेत्तावत् ईश्वरं मां स्वकर्मकृत् यावत् न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम् अर्चादौ अर्चा पूजा इत्यादि अर्चयेत पूजा करें तावत तब तक ईश्वरम भगवान को माम मुझ स्व अपना कर्म निर्दिष्ट कर्तव्य कृत किए हुए यावत जब तक न नहीं वेद अनुभव करता है स्वहृदय अपने हृदय में सर्वभूतेषु समस्त जीवों में अवस्थितम स्थित ट्रांसलेशन एंड परपट बाय एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। मनुष्य को चाहिए कि अपने निर्दिष्ट कर्म करते हुए भगवान के अर्चा विग्रह का तब तक पूजन करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में तथा साथ ही साथ अन्य जीवों के हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव न हो जाए। तात्पर्य, यहाँ पर उन लोगों के लिए भी भगवान के विग्रह प्रतिमा की पूजा करने की आज्ञा दी गई है जो केवल अपने निर्दिष्ट कर्म में लगे रहते हैं। विभिन्न वर्ण के लोगों यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोगों तथा विभिन्न आश्रमों यथा ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास के लिए कुछ निर्दिष्ट कर्म है। मनुष्य को तब तक भगवान के विग्रह प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए जब तक वह प्रत्येक जीव में भगवान की उपस्थिति का अनुभव न करने लगे। दूसरे शब्दों में उस मनुष्य को अपने कर्तव्यों को सही सही निभाने में ही संतुष्ट रहना चाहिए।
उसे अपना तथा अन्य जीवों का भगवान के साथ जो संबंध है उसे अनुभव करना चाहिए। यदि वह इतना नहीं समझता तो यह समझना चाहिए कि भले ही वह अपना कर्म ठीक से निभा रहा हो, किंतु वह व्यर्थ ही श्रम न कर रहा है। इस श्लोक में स्वकर्मकृत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वकर्मकृत का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने निर्दिष्ट कर्मों को पूरा करता है। ऐसा नहीं है कि जो भगवान का भक्त बन जाता है अथवा भक्ति करता है उसे अपने निर्दिष्ट कर्म बंद कर देने चाहिए। किसी को भक्ति के बहाने आलसी नहीं बनना चाहिए, उसे निर्दिष्ट कर्मों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। स्वकर्मकृत बताता है कि मनुष्य को बिना लापरवाही के अपने निर्दिष्ट कर्म करने चाहिए। Omayana Chimirandasya Gyanam Jana Shalakaya Shakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Chikam. Vandeham Siguruho Srijuta Pada Kamalam Sigurum Vaishnavancha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tum Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Sha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Nichanamini Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Pashacha Desatarini Vanchakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. The verse says, Achado Dashchaye Tavat Ishvaramam Swakarma Krit Yavamna Veda Swakriji Sarva Bhuteshwa Vashtitam. Performing his prescribed duties, one should worship the deity of the Supreme Personality of Godhead until one realizes my presence in his own heart and in the hearts of other living entities as well. तो इसमें बताया गया है मनुष्य को चाहिए कि अपने निर्दिष्ट कर्म करते हुए भगवान के अर्चा विग्रह का तब तक पूजन करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में तथा साथ ही साथ अन्य जीवों के हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव न हो जाए। And then this sequence of verses, Kapila Deva explains about the deity worship. तो इस जो आज श्लोक श्रृंखला चल रही है उसमें भगवान कपिल विग्रह सेवा के बारे में बता रहे हैं। In this verse, Kapila Deva, he explains what is the result of the deity worship. तो भगवान कपिल बताते हैं कि जो विग्रह सेवा है उसका क्या परिणाम होता है। And then he says that by worshipping the deities in the temple properly, one can understand the presence of Paramatma in his own heart and the hearts of everybody. तो भगवान कपिल बताते हैं कि विग्रह सेवा करने का परिणाम यह होता है कि आप यदि उचित रूप से ठीक ढंग से यदि विग्रह की सेवा करें तो आप अपने हृदय में तथा सभी के हृदय में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। It means that if one think that he comes to the temple and he was having darshan of the deities, and then
something external. He does not have this kind of realization. कोई मंदिर में आता है तो वो सोचता है मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, मतलब बाह्य रूप से, तो उसको जो है कोई रियलाइजेशन नहीं है। Of course, we through the devotion, one can achieve this result. It means the realization of Paramatma. भक्ति के माध्यम से जो है कोई भी व्यक्ति जो है इस परिणाम को प्राप्त कर सकता है, मतलब कि जो परमात्मा का जो अनुभव है उसको प्राप्त कर सकता है। But it's not only devotion, needs also knowledge. लेकिन सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि ज्ञान भी चाहिए उसके लिए। When the devotee has to understand perfectly the position of the Supreme Lord, his manifestation in his word as the deity, Murti, and also the presence of Paramatma in the heart. तो उसको यह ज्ञान होना चाहिए कि भगवान जो है विग्रह के रूप में है, परमात्मा के रूप में है, और शब्दों के रूप के अंदर, शास्त्रों में शब्दों के रूप में है। It means that knowledge is necessary. मतलब ज्ञान जरूरी है। People in general, they don't have this kind of philosophical understanding. जो लोग बाग होते हैं उनको ये जो फिलोसॉफी है उसका समझ नहीं होती है। They must be, they should be like, should be, should have a lot of devotion, but in general, they don't have this kind of knowledge. मतलब लोगों में थोड़ी बहुत डिवोशन भक्ति होती है, लेकिन ये जो जो ज्ञान है वो नहीं होता है। But those who are follow one, one spiritual process of self-realization, they have to understand philosophically the Krishna consciousness. जो आत्म साक्षात्कार के पाथ को फॉलो करता है उसको कृष्ण भावना मर्द की फिलोसॉफी का भी ज्ञान होना चाहिए। Otherwise, everything becomes external, superficial. नहीं तो सब कुछ जो है वो बाह्य हो जाता है, सिर्फ सुपरफिशियल, मतलब ऊपर ऊपर से हो जाता है। And then when we have darshan of the deities, we can understand that this is the way that we can relate indirectly to Krishna. और जब हम विग्रह के दर्शन करते हैं तो हमको समझ में आता है कि हम इस प्रकार से जो है भगवान से संबंधित कर सकते हैं। At the same time, one has to be aware that Krishna is in our heart, and I have to be this connection with Paramatma. तो दर्शन करते समय हमें समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण हमारे हृदय में भी हैं और हमारा जो है उनके साथ में कनेक्शन है। This connection with Paramatma is called yoga. और जो परमात्मा के साथ में जुड़ना जो है उसे योग कहते हैं। This word yoga means connection. योग का मतलब होता है जो है संबंध, जुड़ना। And Bhakti Yoga, this connection with Paramatma and Krishna is based in bhakti, pure devotion.
और जो भक्ति योग है उसका मतलब होता है कि ये जो परमात्मा है और कृष्ण जो है इनसे शुद्ध भक्ति के माध्यम से, शुद्ध भक्ति में सर्विस के माध्यम से जुड़ना। And then we have to wake up this devotion in our heart. तो हमें जो ये हमारे हृदय में जो भक्ति भाव है उसको जगाना होता है। As in Chaitanya Charitamrita, it said like this: Nitya Siddha Krishna Prema Sajya Kabunaya Shravanadi Shuddha Chichi Karaye Udaya. तो चैतन्य चरितामृत में जैसे बताया गया है, जो महाराज ने श्लोक बोला वो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। This verse says that Krishna Prema is still in the heart of everybody. इस श्लोक का मतलब है कि कृष्ण प्रेम सभी के हृदय में मौजूद है। It's like, for example, one seed of a big arbor. In this seed, there is the whole arbor with leaves, with the flowers, with the fruits, is inside of this seed. तो जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, वो एक छोटे से बीज के अंदर होता है, उसके फूल फल सब जो है उस छोटे से बीज के अंदर होते हैं। But if the seed is put in the earth and then can fructify and appear the whole tree. तो यदि उस बीज को यदि मिट्टी के अंदर बोया जाए तो वो उपज जाता है एक बड़े वृक्ष के रूप में, फूल फल सब कुछ। In the same way, the Krishna Prema is in our heart. And then this verse says that by Shravana and Kirtana, by hearing and chanting, we can develop, we can wake up this Krishna Prema. तो इस श्लोक में बताया गया है कि उसी प्रकार से कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है और उसको हम श्रवण और कीर्तन के माध्यम से जो है उसको जगा सकते हैं। Shravana Kirtana is our sadhana. श्रवण और कीर्तन जो है वो हमारी साधना है। And this verse says, Nitya Siddha Krishna Prema Sajya Kabunaya. Krishna Prema is Sajya. और इस श्लोक में बताया गया है कि कृष्ण प्रेम जो है वो साध्य है। Sajya means the final goal, the perfection. साध्य का मतलब होता है कि जो हमारा जो सिद्धि का जो है अंतिम जो है लक्ष्य है। And then simply by chanting and hearing about Krishna, one can develop this Krishna Prema. और सिर्फ श्रवण और कीर्तन के माध्यम से जो है हम ये कृष्ण प्रेम का विकास कर सकते हैं। Here in this verse, Srila Prabhupada says even this term, Swakarma Krit. Swakarma Krit means that performing his devotional duties. तो इस श्लोक में जो है प्रभुपाद जी ने लिखा है स्वयं कर्म कृत, मतलब उसका मतलब होता है कि भक्ति में सेवा को करना। In the process of Krishna consciousness, we have prescribed the duties. कृष्ण भावना मृत में हमारे को कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। Srila Prabhupada established that we have to follow four regulative principles. जैसा कि प्रभुपाद ने बताया है कि हमें 4 नियम जो है उसका पालन करना होता है। We have to practice the Mahamantra Hare Krishna in our japa. और हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जो है जपा करना होता है। We have to attend Mangalarti, Guru Puja, Gaura Arti, etc. और हमें मंगला आरती, गुरु पूजा, गौर आरती इत्यादि ये सब अटेंड करने होते हैं।
And also, we have to act properly as a Vaishnava. और हमें वैष्णव सदाचार बहुत वैष्णव सदाचार का भी पालन करना होता है, Because we are Vaishnavas, and then you can follow the footsteps of the six Goswamis. Like this. क्योंकि हम वैष्णव हैं और हम जो सिक्स गोस्वामी जो हैं उनके पद चिन्हों पे चल सकते हैं। We are representatives of Jiva Goswami, for example. हम जो है जीव गोस्वामी के हमको प्रतिनिधित्व करते हैं। Rupa Goswami, Sanatana Goswami, they are they belong to our family. जो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी है, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। Our family that our spiritual father is Chaitanya Mahaprabhu. जो हमारे परिवार जो है उसके पिता जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं। And then we have these prescribed duties. और हम जो है हमारी कुछ कुछ जिम्मेदारियां होती है। The common people, there's no prescribed duties. जो बाहर के लोग हैं उनके लिए कुछ इस प्रकार से नहीं होता है। They can do anything like this. They are acting according to the desires of their own minds. जो बाहर के लोग होते हैं वो अपने मन के हिसाब से चलते हैं, जो मन बोलता है वो करते हैं। But the Vaishnavas has prescribed the duties. लेकिन जो वैष्णव होते हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। And there's one very nice verse एक बहुत अच्छा श्लोक है in 11th canto, Srimad Bhagavatam. 11वें स्कंद में भागवतम के। Krishna instructing Uddhava. कृष्ण जो है उद्धव को बता रहे हैं, Tavat karmani kurvita na nirvidyeta yavata matkata shravana dhauva shraddha yavam na jayate. The verse says like this. As long as one is not satiated by fruitive activity and has not awakened his taste for devotional service by Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, one has to act according to the regulative principles of the Vedic injunction. तो इस श्लोक में बताया गया है कि जब तक कोई सकाम कर्मों से संतुष्ट नहीं हो जाता और जो भक्ति में सेवा जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु के माध्यम से अपने जो कृष्ण प्रेम के स्वाद को नहीं जगा लेता है, तब तक उसको जो भक्ति के वैदिक जो वेदों में दिए गए सिद्धांत हैं उनका पालन करना होता है। And then if the person does not get taste of Shravana, Kirtana, and Darshana like this, we have to follow regulative principles. जब तक आपको श्रवण कीर्तन और दर्शन के अंदर स्वाद नहीं आ जाता तब तक हमें जो है जो नियम जो है उनका पालन करना होता है। But Rupa Goswami says that even if we can awaken this devotion, pure devotion, we has to be very careful for manifesting this devotion. तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो हमें बहुत सावधान होना चाहिए जो अंदर जो कृष्ण भक्ति है उसको जगाने के लिए। He says like this: if you in your heart you have pure devotion to Krishna,
externally, you have to act performing regulative principles. तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि आपके हृदय में कृष्ण प्रेम है तो बाह्य रूप से आपको सिद्धांतों का पालन करते रहना चाहिए. Regulative principle means Mangalarti, Japa, hearing Srimad Bhagavatam, and etc. Like this. It's not that we cannot abandon all this practice, spiritual practice. तो जो बाह्य सिद्धांत जो बताए गए जैसे जपा करते हैं, मंगला आरती में आते हैं, ये सब आरतियां में आते हैं, तो यदि किसी के हृदय में कृष्ण प्रेम जग जाता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि इन सब चीजों को त्याग देना होता है. And then this verse in Srimad Bhagavatam, Kapila Dev is giving us this instruction that by worshipping the deities, तो इस श्लोक के अंदर भगवान कपिल हमें बता रहे हैं कि विग्रह की सेवा करने से, by the deity worshipping, we can realize the presence of Paramatma in our heart. तो विग्रह सेवा से जो है हम हमारे हृदय में परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं. It's not only Paramatma in our heart, but Paramatma in the heart of all living entities. केवल अपने हृदय में ही नहीं बल्कि सभी जीवों के हृदय में हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं. Yes. And then only the devotees can understand this. केवल भक्ति इस चीज को समझ सकता है. Those who are not devotees cannot understand worshipping the deities. जो भक्त नहीं है उनको समझ में नहीं आता है कि ये विग्रह की सेवा क्या है. They think that this is sentimental. वो इसको जो है भावुकता करके समझते हैं. Because of that, I, the knowledge is very important. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञान जो है, नॉलेज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है. We have to study these shastras. तो इसके लिए हमें हमारे पास ये शास्त्र है. The shastras is our life. जो शास्त्र है वो हमारा जीवन है. And then through the devotion and knowledge, we can become fully Krishna consciousness. और भक्ति के और ज्ञान के माध्यम से हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं. Jai. If someone has any question or comments, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. okay. Srila Prabhupada ki jai. जय. तो बहुत 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 धन्यवाद परम पूज्य पुरुषात्राय स्वामी महाराज जी का. वो हमें रविवार, सोमवार और आज मंगलवार 3 दिन से हमें अपनी वाणी से कृतार्थ कर रहे हैं और शुद्ध भक्ति की ओर हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं. हम महाराष्ट्र का पुनः आभार प्रकट करते हुए हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र का उद्घोष करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. His Holiness PuruSatraya Swami Maharaj ki jai. So thank you Maharaj for giving us nectar Sunday, Monday and Tuesday.